How is audio video now? सर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है. Okay. All right. So we have come to the end of the topic. As I said, what we have done is basic principle, the block diagram, types of transducer, how does the ecograph work, then associated with that, how the recording is happening, unka synchronization kaise hota hai. We have done ranging and phasing, etc., etc. Today we'll be discussing little bit about the maintenance that needs to be carried out. What are the maintenance to be carried out in the echo sounder to make it running in a perfect manner? So there are few, again, if you have understood what is this device, how it works, then all the maintenances will be easy to understand. Remember that there is a pulley on which this belt rotating, there is paper, etc., etc. So when the belt is there, uske upar stylus hai, stylus is burning the paper. So when the stylus is burning the paper, there is some deposits on the stylus. Carbon deposit हो जाता है इसके ऊपर और इसके चलते एक शील्ड बन जाती है, तो हीट ट्रांसफर पेपर पे नहीं होता. So the stylus head should be cleaned once in a while. अगर रिकॉर्डिंग खराब आ रही है, आप गेन बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, फिर भी प्रिंटिंग अगर सही नहीं आ रही, तो यू शुड क्लीन द print head or stylus, whatever. We'll share the screen and then we'll go through the maintenance to be carried out. Then we need to talk about also the errors of the echo sounder. So allow me to share the screen, just 1 second. Is my screen visible? जी सर, स्क्रीन Okay. ठीक है. So पहला है प्रिंटेड या स्टाइलस क्लीनिंग, जो अभी बात करी हमने. देयर इज कार्बन डिपॉजिट दैट शुड बी रिमूव्ड. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या कोई और दूसरा क्लीनिंग एजेंट से लेके कॉटन से उसका टिप साफ करते हैं. उसके लिए ढक्कन सामने का खोलना पड़ता है. बेल्ट से थोड़ा सा स्टाइलस को थोड़ा सा लिफ्ट करके और उसका प्रिंटेड क्लीन करते हैं. दैट विल ensure that the printhead is clean and the printing is happening in a nice manner. Next one is recorder paper. For a given voyage, you need to maintain enough paper in the recorder. That has to be ensured कि उसमें पेपर पूरा है for the intended voyage. उसके लिए एक इंडिकेशन होती है. कोई भी रोल होता है पेपर का, तो आपने देखा हुआ है साटसी का पेपर रोल हो या नावटेक्स का पेपर रोल हो या कहीं कोई भी अगर रोल है, तो टू इंडिकेट दैट इट इज फिनिशिंग देयर हैज टू बी अ वाटर मार्क. तो लाल कलर का मार्क बना हुआ था, आप देखते हैं, उससे पता चलता है कि पेपर खत्म होने वाली है. सो दैट विल इंडिकेट दैट द पेपर नीड्स टू बी चेंज. सो चेंज द पेपर रोलर. नेक्स्ट, cleaning of transducer. Well, while the ship is afloat, there is no access to the transducer. What we are talking about here, that when the ship goes to dry dock, the transducer should be cleaned properly. It should be protected from any kind of paint and damages. So if there is hull painting happening, तो इसको कवर करना चाहिए, कोई ग्रीस वगैरह नहीं लगा है उसके ऊपर. So transducer has to be maintained in a nice clean manner. अगर इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स आ गए, इसके ऊपर कुछ लेयर्स आ गया, तो that will affect the transmission of the acoustic waves and then ultimately
the performance of the echo sounder will be affected. Something called user calibration. Device is giving you the UKC or the draft, the water depth. You need to ensure that it is giving you correct kind of reading. Doppler log में भी हमने पढ़ा था कि calibration करते हैं. This is also a measuring equipment. This is to measure the depth. So it should be ensured that it is giving you right kind of readings. Blindly you cannot and should not depend on this. So out at sea, there is nothing, no calibration that can be done by the user. But when in port, you can compare the echo sounder reading with the manual sounding. You have sounding tape, you drop the tape in the water फाइंडिंग पेस्ट लगा करके उससे मेजर कर लीजिए, देखिए कि कितना डेप्थ है, वाटर डेप्थ कितना है, अपना ड्राफ्ट देखिए और इको साउंडर की रीडिंग के साथ उसको मैच करने की कोशिश कीजिए. So that will give you an idea how accurate is your echo sounder. अगर कुछ प्लस माइनस है तो that will be kept in mind for any kind of decision making. Zero line adjustment. Now that we know how the echograph works, the stylus should be at zero position when the transmission is happening. So zero line adjustment is meaning that only that it has to be synchronized. So user manual में method दिया होगा how to maintain the stylus at zero line when the transmission takes place. There is this stylus which should be at 0 point. If not, अगर stylus ऊपर नीचे है, zero line से पीछे रह गया, आगे रह गया, जब transmission हो रही है, mismatch हो गया, तो गलत reading होगी. That also we have talked about earlier. So there will be controls available, otherwise also refer to the manual for that. Range selection. There is this range selector switch. This is an important control basically from the point of view of accuracy. The range selected must be including the depth that you are reading right now. If you are in 200 meters of depth and the range is 0 to 50 meter, there will be wrong reading. Totally misleading information will be there. Also, ulta. If the depth is 50 meters, if you are keeping the range in 200 meters range, then also there will be wrong read. So echo sounder range should be selected for the depth you are measuring. Let us say 85 meters you are measuring. Your range should definitely be something like 50 to 100 because 85 meter is falling between 50 and 100. So this range is okay. But if you keep it 100 to 200 or 0 to 50, that kind of range, then you are going to get wrong reading. We will talk about this, how or what kind of errors we are going to get if we have selected wrong range. अभी errors में बात करेंगे उसके बारे में. Contrast adjustment. Contrast is basically the darkness of printing. So depending on your particular preference, you can increase the gain or decrease the gain. If you increase the gain, more signal, more voltage is applied to the stylus. It becomes hot more and the heat generated is more. Heat generated is more. That will burn the paper darker and recording will be darker. So there can be
this contrast adjustment also. As we have seen that there are frequencies, I mean frequency is a very important factor which affects the performance. We have seen what happens if the frequency is too low, what happens if the frequency is high. दोनों के अपने अपने benefits हैं. So there may be frequency selection or it may be automatic. That means when you are changing the range scale, automatically the frequency will shift to lower or higher frequency as required. So that is frequency selection, maybe automatic, maybe manual. Then we have gain control. Gain should be adjusted for the depth you are reading. When we are in deep water, the signal comes from very deep, तो बहुत weak हो जाती है, इसका strength कम हो जाता है. Gain should be increased. If you are reading shallow water and keeping very high gain, then the paper will start becoming darker all the way. So gain should be reduced. So there is this gain adjustment also. For shallow waters, gain should be low. Deeper waters, gain should be increased. Finally, it will depend on your choice where you are comfortable. So these were some maintenance that you need to carry out on the eco sounder in order to give you correct speed. Correct depth readings. Any questions here? Any questions here? No, sir. Okay. So now talking about the errors of the eco sounder. The errors, basically what is error? Wrong reading. Depth is something, UKS is something, telling me something else. गलत बता रहा है. There can be various factors for the errors. Some of the errors are because of the equipment itself. Device में ही गड़बड़ है कुछ. Some of the errors may be because of external factors. Device तो ठीक है, लेकिन बाहर के condition ऐसे हैं कि गड़बड़ हो रही है. Now again, think of the ecograph, how it works. Remember all that we had been discussing about ecograph. वही stylus, वही paper, वही movement, वही synchronization, वही half the speed, everything. Think of it and tell me what is the meaning of stylus speed error. What should it be? What should be the meaning of stylus speed error? कि सर स्पीड ऑफ स्टाइलस हाफ नहीं है acoustic wave की स्पीड से. Exactly, very good, well done. It should be always at this half the speed of the acoustic wave, and so if it is running more than 750 meters per second, क्योंकि 750 is half of 1500, which is the speed of acoustic wave. So very rightly said, it should be maintained at half the speed of acoustic wave. There is a control provided, or look at the user manual. It should be always synchronized at half the speed of the acoustic wave. If not, अगर तेज चल रही है तो डेप्थ ज्यादा बताया करेगा, अगर धीरे चल रही है 750 से तो डेप्थ कम बताया करेगा. Then there is this Pythagoras error.
This Pythagoras error is due to two transducers installed. When there are two transducers installed, one for transmission, other for reception. When the reading of the depth is happening, the signal goes like this. Total path of the wave is this plus this. Let us say A and B. So total path is AB into 2. Is that right? So the depth you are going to get, yes, the depth you are going to get is AB. But that is not correct. What depth is, actual depth is from here. Let us say OB. So what we are reading is basically the hypotenuse of a triangle. But actually it should have been the perpendicular. So a bit of resolution of this is done. Let us say the distance between this transmitter and receiving transducer is x. Then OA will be x by 2. Is that right? Yes, sir. So OA square will be known to you. AB square you are already getting. So can we find out OB? Yes, sir. So using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So this is Pythagoras error, and this is going to be more prominent in shallow waters, less prominent in deeper waters. क्योंकि अगर डेप्थ कम है तो ये डायगोनल और बढ़ जाता है. जैसे जैसे हम डीप वाटर में जाएंगे, difference between perpendicular and the hypotenuse is going to be less and less and less. So Pythagoras is more significant in shallow waters. Then there is something called instrument drift. What happens when you are, let us say, at the jetty? The depth is, let us say, 10 meters, for example. So 10 मीटर का रीडिंग यहां पे आ रहा है. चूंकि जहाज खड़ी है तो लगातार यही रिकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं? 10 मीटर कांस्टेंट होना चाहिए. Yes, sir. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट चलता जाता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वही 10 मीटर्स ऑफ डेप्थ इज हैपनिंग लाइक दिस. धीरे धीरे नीचे एक तरफ को जा रहा है या ऊपर जा रहा है, या हो सकता है कि इस तरीके से आना शुरू. तो इवन व्हेन द डेप्थ इज कांस्टेंट, ship not at all moving, signals coming from the same depth again and again, it should have been reading a fixed value. फिर भी मोटर का स्पीड और ये वो सब जैसे जैसे गर्म होता जाता है इक्विपमेंट, तो थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट हो सकती है. बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट इज बिकॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ द जीरो लाइन. तो जीरो लाइन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तो बीच बीच में इसको चेक करना चाहिए कि जीरो लाइन सही पे है या नहीं. मॉडर्न जो इको साउंडर्स है उसमें ये प्रॉब्लम्स कम है. पहले वाले में थोड़ी ज्यादा होती थी. जो मैकेनिकल टाइप होते थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप, उसमें ज्यादा होता था. बट nowadays we have more stable kind of electronic circuits and compensations are there. So this problem is less in the recent and modern eco sounders, but definitely used to happen in older one.
So that is called instrument drift. Zero line adjustment error, again we know about it. Zero line, the stylus should be at zero line when the transmission is happening, that same synchronization. So that is zero line adjustment. Few things which are not related to the equipment, ये जो पहले हमने बात करी थी वो equipment की errors थी, instrument drift हो रहा था, zero line सही नहीं थी, stylus का speed सही नहीं था, transducer दो लगे हुए थे, Pythagoras error. These are some operational errors. When we are using it, then we get some wrong readings because of external conditions. So first one is velocity of wave or acoustic wave in the water. You know all about it now. Multiple times we have discussed. So somebody tell me what is the meaning of propagation error? Yes, quickly. Don't waste time. Sir, speed depends on the density of the water. So if density changes, the speed of the propagation changes. Very good. So although we take 1500 meter per second as the speed of the sound wave in water, but because of density, because of temperature, this is slightly changing. तो हमारा स्टाइलस स्पीड तो अपने कांस्टेंट स्पीड्स पे चल रहा है, हमने एडजस्ट कर दिया उसको 750 पे. अब जब प्रोपोगेशन की स्पीड ही चेंज हो गई तो रेफरेंस ही चेंज हो गया, तो उससे कंपैरेटिवली स्टाइलस स्पीड ज्यादा या कम हो जाती है. So that may lead to error. Now think, if you are going from salt water to fresh water, what will be the reading? Will it be more than actual or less than actual? Okay, pehla question. In fresh water, the speed of the sound will be more or less? More, sir. Speed of the sound will be more, sir. Fresh water में ज्यादा हो जाएगी? Yes, sir. No, negative. Lighter the medium, less is the speed. Use your knowledge. In air, what is the speed of the sound? ये हम डॉपलर लॉग में भी 25 बार बात कर चुके हैं. What is the speed of sound in air? 330 मीटर पर सेकंड. 320, 330, 340 ऐसे है, और सॉल्ट वाटर में 1500 है. तो लाइट मीडियम कम स्पीड हो गई ना, तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में कौन लाइटर मीडियम है? Fresh water, sir. तो स्पीड कम हो जाएगी ना, 1430, Yes, sir. 1435, 1432 ऐसा कुछ स्पीड हो जाता है. दैट मीन्स the speed of the wave is becoming slow. When the speed of the wave is slow, it is taking more time to go and come back from the depth. तो स्टाइलस तो आगे भाग जाएगा ज्यादा टाइम में, so it will start showing more depth. So in fresh water, if you are reading something on the screen of the echo sounder, वो उतना नहीं है, उससे कम डेप्थ है, वो ज्यादा बता रहे हैं. So that is propagation error. Then thermal and density layers. When the ship is sailing in different waters, there may be refraction, there may be change in the direction and the speed of the sound
because of various layers of water. Sometimes you are coming in an area when there is a river meeting the sea, वहां पे स्ट्रीम्स हो सकते हैं, अलग टेम्परेचर का हो सकता है, नदी का टेम्परेचर पानी का कुछ होगा, यहाँ का कुछ होगा, सो लेयर्स बन जाते हैं. That affects also the speed and it may also alter the behavior of the echo sounder. So these layers may also cause little bit of errors. Then there is multiple echoes and secondary echoes. Now this is not related to external factor. It is related to the range selection that we were talking about. If wrong range is selected, you might get multiple echoes or secondary echo, depending on कि क्या कंडीशन आती है, कैसा आपने रेंज, किस तरीके से गलत रेंज सेलेक्ट किया. Already discussed that the range should include the depth that you are reading. Water depth should be within the upper and lower limits of the range selected. Now multiple, write it down. Write it down कि क्या होता है. Multiple echoes will be seen if the depth is less and the range selected is more. Maybe 30 meters of depth of the water actually, and the range selected is 200 meters. So multiple echoes will be seen if you are selecting a range which is more than the actual depth that you are reading. So what will happen in multiple echo? The recording will be showing at fixed intervals, multiple recordings of the depth will be there. दोनों के बीच में एक ही तरीके का गैप होगा. जो पहली वाली होगी वो ज्यादा डार्क होगी, दूसरी वाली होगी वो थोड़ा लाइट होगा, उसके नीचे और लाइट होगा. So it is basically the same echo getting reflected back and forth between the hull of the ship and the seabed. एक बार जाके रिकॉर्डिंग हो गई तो रिकॉर्डिंग आ गई. चूंकि शिप का हल भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्टील सॉलिड, तो ये सिग्नल फिर से वापस चली जाती है, फिर से वापस रिफ्लेक्ट होके आती है, दोबारा रिकॉर्डिंग हो जाती है. लेकिन 2 बार चल चुका तो स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है, लाइट हो जाएगी रिकॉर्डिंग. So there is going to be multiple echoes. What is the condition of multiple echoes? किस कंडीशन में होगा? सर जब अपना डेप्थ कम रहेगा लेकिन रेंज ज्यादा सेलेक्ट कर रखा होगा. Very good. The secondary echo is opposite. When the depth is more, but the range selected is less. Depth तो है 180 मीटर का, आपने रेंज सेलेक्ट कर रखा है 0 to 50. In that case, there will be secondary echo reference. What interference? What we are saying? एक पल्स P1 चला है, डेप्थ ज्यादा है, अभी वो जा ही रहा है. P1 अभी यहां पहुंचा है, चूंकि हमने रेंज कम सेलेक्ट कर रखा है तो PRF ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी पल्सेस शुरू होंगी. तो जब P1 यहां पे पहुंचा है तो P2 इज नाउ स्टार्टिंग.
जब ये P1 टकरा के वापस चल रहा होता है और पहुंचता है, P1 जब पहुंचता है उस समय हो सकता है कि P2 या P3 या P4 चल रहा हो। तो पल्स का टाइम है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग हम वेट कर रहे हैं P3 का, लेकिन इको आ रही है P1 की, क्योंकि PRF ज्यादा है तो जल्दी जल्दी हम पल्स भेज रहे हैं, लेकिन डेप्थ इज मोर, तो वो P1 जो भेजा था, पल्स नंबर 1 जो भेजा था, वो तो अभी जा ही रही है, टकरा के अब आएगी, तब तक पीछे P3 P4 ट्रांसमिट होने लगा। One cycle of transmission and reception should finish, then only the P2 should start. That is the whole idea about PRF. अगर डेप्थ कम होती तो P1 जाके आ जाता, फिर P2 आती, फिर P3 आता, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ट्रांसमिशन रिसेप्शन का, तो अगली पल्स आनी चाहिए थी। यहाँ पे वो हो रहा है क्या? एक साइकिल कंप्लीट होने नहीं के सर। पहले दूसरा पल्स आ जा रहा है, तो स्टाइलस तो फिर से 0 पे आ गया, दूसरे पल्स के लिए 0 पे आ गया, हर पल्स के साथ 0 पे आ जाता है स्टाइलस। तो स्टाइलस इज एट 0, अभी वो कहीं जा रहे हैं, तब तक पल्स वो पीछे वाला ये पल्स नंबर 1 का इको आया। अब जहां पे भी स्टाइलस होगा वहां रीडिंग कर देगा। पल्स चल रही है नंबर 3 और इको आ रहा है नंबर 1 का, तो इन दैट केस द इको साउंडर मे बी रिकॉर्डिंग अ डेप्थ एनीवेयर, जहां पे भी होगा वहां पे रिकॉर्डिंग दिखा देगा, टोटली रॉन्ग रिकॉर्डिंग। So that is called secondary echo interference. Then there are other dynamic errors जो जहाज के मूवमेंट वगैरह से it keeps on changing. When the vessel is rolling pitching तो प्लस माइनस होता रहेगा। The ship is bobbing up and down, heaving, तो कभी कम दिखाएगा डेप्थ, कभी ज्यादा दिखाएगा, depends on the swell etc. Then there can be other kind of errors for entering wrong draft. There can be error due to squat when you are going in shallow waters. I suppose you know about squat, right? अब तो हो गया, कोर्स तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, करेक्ट? स्क्वाट क्या है? व्हाट इज स्क्वाट? Yes. व्हाट इज स्क्वाट? यस, जवाब दो। Nobody in the class knows about squat. सर पता है लेकिन उतना क्लियर नहीं है। उतना क्लियर नहीं है, ओके। शॉर्ट में एक लाइन में बता देता हूं। जहाज चल रही है ऐसे, मान लो इवन कील, जब शैलो वाटर्स में जाएंगे तो यही जहाज आगे की तरफ झुक जाता है, यूकेसी कम हो जाती है। वो इसलिए कि यहाँ पे पानी तेजी से बहने लगता है, जगह कम है, जैसा हम पाइप का मुंह दबा देते हैं तो प्रेशर, पानी तेजी से निकलता है ना, हाँ जी सर। तो वैसे ही जब जहाज ओपन वाटर में हो तो बहुत सारा पानी है यहाँ, लेकिन जब डेप्थ कम हो जाती है तो समझ लो कि ये पानी जो है इतने में दब गया, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर बिकम्स मोर। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर इज मोर, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाती है, और प्रेशर कम होती है तो बॉयंसी लॉस होता है और नीचे दब जाता है, तो जहाज जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ दब जाएगा, नीचे हो जाएगा।
अगर आप डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रहे हैं तो आगे की तरफ दब जाएगा, और शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ जा रहे हैं तो स्टर्न दब जाएगा। दबता यही वाला साइड है जहां पे कम डेप्थ है, क्योंकि प्रेशर लॉस यहीं पे होता है। हाई स्पीड ऑफ वाटर विल बी एट द प्लेस वेयर देयर इज शैलो। तो शैलो वाटर्स में ये स्क्वाटिंग होती है। स्क्वाट का हिंदी का मतलब मालूम है? उकड़ू नहीं सर। बैठना, उकड़ू बैठना, घुटने के बल मतलब घुटने पे करके बैठना, जैसे पॉटी करते समय बैठते हैं ना पुराने स्टाइल में, उसको बोलते हैं स्क्वाटिंग। हाँ सर। तो जहाज वैसे ही झुक जाती है, इसीलिए स्क्वाटिंग बोलते हैं। ऑल राइट, सो सर जैसे आपने बताया अभी हमेशा याद रहेगा। हाँ हाँ सही बात है। इसीलिए तो मैं तरह तरह के एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको, ताकि आप रिलेट कर सको अपने पुराने एक्सपीरियंस से। जो चीज हम जानते हैं, देखते हैं, उससे रिलेट करते हैं तो चीजें याद रहती हैं बढ़िया से। इसीलिए तो उल्टे सीधे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बट टू रिलेट आवर अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, everything is connected. This is the study of the shape is not away from experience of normal life. अभी गार्डन होस की बात करी, वो तो हम जानते हैं, लेकिन अगर कोई हमें बताने लगे बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड प्रेशर एंड वेलोसिटी एंड प्रेशर का रिजल्टेंट सेम होता है, तो हम तो फिजिक्स सोचने लगेंगे। अरे नहीं भाई, वो हमारे घर में होता है। पानी पटाते समय हम यही प्रिंसिपल यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए मुंह दबा देते हैं तो पानी दूर तक जाता है। वी आर यूजिंग दैट प्रिंसिपल इन द हाउस। गाड़ी धोते समय करते हैं, मुंह दबा देते हैं, तेज हो जाती है प्रेशर। द सेम प्रिंसिपल वी आर यूजिंग व्हाट इज यूज्ड इन द शिप और is experienced in the ship also. स्टेबिलिटी हम पढ़ते हैं इतना, डेली लाइफ में हम खड़े होते हैं तो स्टेबल होते हैं। भाई अपना बॉडी का वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे पैरों के बीच में होना चाहिए, नहीं तो गिर जाऊंगा। वही चीज जहाज में होती है, अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में नहीं होगा तो टॉपल कर जाएगी, कैप्साइज करेगी। रोलिंग पिचिंग में, रोलिंग के समय जहाज कैप्साइज करता है। क्यों करता है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से बाहर चला जाता है। When the ship is rolling, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एरिया से, इसके बेस से बाहर चला गया तो गिर जाएगा। ज्यादा अगर यूं हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर को गया किसी तरीके से, तो जहाज उलट जाएगी। ऑल दिस इज कॉमन नॉलेज, वी ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, वी जस्ट हैव टू रिलेट कि अच्छा ये चीज ऐसे, ओके ऐसे। एनीवे, तो अगर ट्रिम है तो ट्रिम के चलते भी होगी। The transmission will no longer be happening vertical but at an angle. तो डेप्थ जो रीडिंग है that will be coming from a longer distance. तो ट्रिम के चलते भी थोड़ी बहुत एरर हो सकती है। These are dynamic errors, keeps on changing. We have already talked about aeration and cross noise. Is it right or not? सर एयरेशन का तो याद है, एक बारी क्रॉस नॉइज बता दीजिएगा प्लीज वापस। पढ़ते नहीं हो दोबारा जाकर के तुम लोग। When the transmission is happening, अगर दो ट्रांसड्यूसर हैं, एक ट्रांसमिशन एक रिसेप्शन के लिए, तो जब ट्रांसमिशन होती है तो जाकर के और नीचे से टकरा के आना चाहिए। लेकिन रिसीवर तो यहाँ पे भाई रेडी है ना सुनने के लिए। तो जैसे ही ट्रांसमिशन होती है वैसे ही ये रिसीव कर लेता है, साइड में तो खड़ा है।
तो हर ट्रांसमिशन के साथ ये रिसीवर रिसीव कर लेता है, मतलब ट्रांसमिशन हुई नहीं कि रिसेप्शन हो गया, डायरेक्ट वेव, रिफ्लेक्टेड नहीं, डायरेक्ट जो ट्रांसड्यूसर से चली है रिसीवर को सीधी पहुंच गई, तुरंत ट्रांसमिशन हुई, तुरंत रिसेप्शन हो गया। स्टाइलस कहां होगा इस समय? स्टाइलस कहां होगा इस समय? जीरो मार्क। जीरो मार्क। तो जीरो मार्क पे, जीरो के एरिया में बहुत डार्क प्रिंटिंग आती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता रहता है, तो जीरो लाइन के आसपास में बहुत डार्क प्रिंटिंग होती है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस नॉइज। However, there is an electronic solution to this. What is that solution? अब ध्यान आ रहा हो तो कि हमने जो बात किया था, कंट्रोल स्वेप्ट गेन। वेरी गुड, स्वेप्ट गेन कंट्रोल। जैसे ही ट्रांसमिशन होती है उस समय रिसीवर का गेन लो कर देते हैं, कान बंद कर देता है वो। ट्रांसमिशन जब हो रही है तो कान बंद कर देता है, फिर जब वेव निकल गई तो खोल देता है कान अपना। अब जब वापस आएगी सिग्नल तो वो रिसीव करेगा। हर पल्स के साथ गेन इज रिड्यूस्ड, द ट्रांसमिशन हैपनिंग, गेन रिड्यूस्ड। फिर जब वेव निकल गई आगे, उसके बाद रिसीवर का गेन वापस खोल देते हैं, तो जो सिग्नल टकरा के वापस आई दैट विल बी रिसीव, so that is swept gain control. So these are the two sources of noise, aeration and cross noise. But apart from that, the echo sounder transducer may pick up other noise also. Noise will result in printing of unwanted signals. तो डेप्थ तो ऐसे चल रही है, लेकिन जो नॉइज आएगा, नॉइज के चलते जीरो लाइन पे थोड़ा सा डार्क लाइन आता रहेगा, और इधर उधर की कुछ आवाज आती है तो उसकी प्रिंटिंग भी आती रहेगी। तो जो आप देख रहे हैं ये बाकी सब डॉट्स वगैरह, दैट इज नॉइज। नॉइज कैन बी एनी सिग्नल विच इज नॉट वांटेड। इको साउंडर में द रिक्वायर्ड सिग्नल इज द रिफ्लेक्टेड पल्स, व्हाट वी कॉल द इको। बट उसके अलावा कुछ भी सिग्नल आता है तो वो आउटपुट में आ जाएगा। आउटपुट हमारी प्रिंटिंग है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मेरे कान खुले हैं, आपसे बात कर रहा हूं, बगल में एक पटाखा छूटेगा तो वो भी कान में जाएगी। So these are all noise. This is noise. This is the pulse that we wanted, और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो डेप्थ रिकॉर्डिंग अलग। सो क्रॉस नॉइज के बारे में हम बात कर चुके हैं, अभी भी बताया है आपको। जस्ट रीड क्विकली, एकदम फटाफट। नेक्स्ट, so electronic solution, swept gain control. Next, other sources of noise can be biological. Dolphins इको साउंडिंग करती हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। Whales इको साउंडिंग करती हैं, एकदम सेम प्रिंसिपल। दे प्रोड्यूस अ साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। द साउंड वेव विल ट्रैवल, जहां खाना होगा, कोई दूसरी मछली उछली होगी, उससे टकरा के वापस आएगी सिग्नल, डॉल्फिन रिसीव करेंगे उसको,
और डायरेक्शन उसे पता चल जाएगा कि इस तरफ से आ रहा है, उधर को चल पड़ेंगे। Exact same principle of echo sounding is used for finding fish as food by these sea animals also, and it is also used by fishing vessels. Fishing vessel is here, the depth is here, but they keep on looking for the shoal of fish. तो यहाँ से टकरा के फिश से टकरा के सिग्नल वापस आती है, कुछ सिग्नल वापस भीतर जाके वापस आएगा। तो रिकॉर्डिंग जो आएगी हमारी या फिशिंग बोट में, वो डेप्थ तो ऐसे दिखा रहा है और यहाँ पे ये फिश shoal of fish है, तो they will put the net here, try to pick them up. So echo sounder is very effectively and very, frequently used in fishing boats also. Less for finding depth, more for finding fish. Then there can be electrical noise. There can be other electrical devices which are, running, making contact, breaking contact, like motors and all that. They may produce some kind of noise. So those electrical signals may be picked up by the echo sounder, either transducer or the device directly. Then there is internal noise of the receiver itself. Amplifier self noise, what we are saying. Then other kind of noise coming from the ship, vibrations and all that may be picked up directly. And as we already discussed, that it will appear as different dots, so many dots on screen of the or paper of the recorder. So these are noise sources. We also talked about aeration. Now you know about it. These are due to the bubbles in front of the transducer. The bubbles restrict the signals from passing through. The bubbles itself will reflect some energy. So that is called aeration. When the ship is going stern, the churning water from the propeller comes right in front of the transducer. The signal gets blocked. The waves cannot pass through this too much of bubbles. So depth reading may fail there. Stern जाते हुए echo sounder बहुत बार काम नहीं करता है। सिर्फ जीरो लाइन पे खूब हेवी डार्कनेस आ जाएगी, क्योंकि सारा सिग्नल एयर बबल से टकरा के वापस आ जा रहा है तुरंत ही। So that is called aeration. Two minutes more. What are the corrections to be applied to echo sounder when we compare the echo sounder reading with the charted depth? It's a common sense topic. Now that we have understood how the things operate, how it works. So echo sounder is giving you UKC. Of course, static draft must be added. The charted depth is at the datum. So tide conditions, that should be added. There can be dynamic motion of the ship, heaving up and down, swell के चलते, तो कभी ज्यादा बताएगा, कभी कम बताएगा, so average करना चाहिए उसको. Sound velocity correction, we have already seen different waters, the speed is different. So that correction should be applied. Static draft बात कर लिया हमने. Dynamic
स्क्वाड के चलते something called settlement. When the ship starts to steam, when the ship is starting to steam, अगर ये इतना है, जब चलने लगती है स्पीड से, तो जहाज थोड़ा सा भीतर दब जाता है, थोड़ा सा बॉडीली नीचे सिंक हो जाता है. That is called settlement. So if at all, these are minor things actually. break. Yes. All right. So these are some corrections that should be applied to the eco sounder reading, and with that we are done. अगले क्लास में we will talk about ECDIS. Quickly we'll complete it in 2 classes. Any questions? वैसे टाइम एक्स्ट्रा हो गया, 4 मिनट ऊपर हो गया. Any questions? खाना भी नहीं बोलते हो आप लोग, कितना रगड़ करना पड़ता है आपके साथ. Yes. So no question. चलो, then signing नहीं off. सर, अभी कोई क्वेश्चन No question. Bye, signing off. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.